Yes, Mataji. Hari Bol. Hare Krishna, everyone. Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada. Let's start again. This is Gayatri Mahapatra from Bhakti Fest Gaurangi. My humble obeisance to all the distinct gathering. It gives me immense pleasure to welcome you all to the second monthly function of Bhakti Fest Spiritual Group. Bhakti Fest is the brainchild of Dr. Indumati Mataji, who is not only our spiritual guide and mentor, but also a pure devotee of Lord Krishna, seen very rarely in today's materialistic world. So when the whole world was suffering from the evil effects of corona pandemic, we the children were forced to be locked down in our home. It gave us a lot of mental tension and anxiety. In this critical juncture, Bhakti Fest program came with a lot of spiritual amusement and also broadened our spiritual awareness. During the virtual meeting in every weekend, we were getting a lot of knowledge regarding the pastimes of Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu. There was also virtual visit to the religious places at Puri. Most importantly, our mentors gave emphasis on chanting Lord's holy name. Chanting the spiritual call to God gave us a lot of spiritual bliss and happiness. In reality, all the living entities are eternal servants of Supreme Personality of Godhead, that is Lord Krishna. Bhakti Fest program provided us the opportunity to realize our spiritual nature. It removed our spiritual ignorance. It provided us the most excellent platform for exhibiting our divine character. It is very surprising to see small children of age 5 to 6 years memorizing difficult slokas of Gita and reciting flawlessly in their sweet voice. It seems as if we are remaining in our homes, but at the same time getting spiritual atmosphere of Gurukul ashrams. For all these, I express my heartfelt gratitude to all the members of Bhakti Fest group who are so much committed to spread the message of Srila Prabhupada, who is the heart and soul of ISKCON. So that's all about Bhakti Fest. Now our first program is Manglacharan. Over to you, Vishnupriya Mataji. Hari Bol. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna Mataji, Tandavas Pranam. Hare Krishna, everyone. Mataji, Dandat Pranam. Hare Krishna Mataji. And I'm mentor of Gopu Gopika 2 and Gopu Gopika 3. So, first of all, I would like to thank Indu Mataji for giving us such a beautiful opportunity to serve these children. And without any delay, let's start our program. So we will start with our Mangala Charan. So we have 3 children from Gopu Gopika 2, Anukrita Aradhya and Sriniket and Tamanna. So we will start with Anukrita. Hare Krishna and Dandavat Pranam. A humble obeisance to Lotus feet of Radha Madhava. My name is Anukrita Panigrahi. Today I am going to recite the Guru Pranama. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Now I am going to recite the Prabhupada Pranam Mantra. Namo Vishnupadaya Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Anukrita. Now Aradhya,
Hare Krishna, Aradhya. Hare Krishna, my name is Aradhya. Today I am going to recite Gaurang Pranam Mantra. So let's start. Namo Mahabadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Trishe Namaha. Thank you. Very good, very nice. Mataji. Now, Hare Krishna, Tamanna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, my name is Tamanna. Today I am going to recite Panchatattva Mantra. Let's start. Namo Om Brahmanya Devaya Ko Brahmana Hitaya Cha Jagat Gitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna. Very good. Thank you, Tamanna. Hare Krishna. Okay, now we will proceed with our program. And over to you, Chetna Mataji. Sriniket is left. Sriniket is absent today, Mataji. Okay, fine, no problem. Then Prabhati Mataji. We'll start with Bhagavad Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna, everyone. Dandat Pranam to all of you. Welcome to our Krishna program. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. And Ari seal लिखा है Hare Krishna Mataji देवड़ा को. Mataji Dandat Pranam. You can start, Tanishka. आज मैं कृष्णा बलराम प्रणाम मंत्र बोलने जा रही हूँ. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणाहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. Vasudha. Thank you, Tanishka. वेलकम माताजी. हरे कृष्णा माताजी. We will start. Hare Krishna everyone, I am Vasudha from class 1 section A from Happy Hour School, Bhubaneswar. Today I am going to recite Hare Krishna Pranam Mantra. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Very good. हरे कृष्णा माता. Thank you, Vasudha. Then Nidhi. हरे कृष्णा माताजी and Dandavat Pranam. Today I am reciting Radha Pranam Mantra. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustute Devi Pranamami Hari Priye. Hare Krishna. Very good. Then Arman. Hare Krishna everyone. My name is Arman Patir. I am going to recite Vaishnav Pranam Mantra. Vancha kalpadharobhyasya kripa sindhu bhayavacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah.
Hare Krishna. Very good, Arman. Very good. Thank you so much to all of you. I would like to talk Gayatri Mataji. We will proceed. Yes, Mataji. Thank you, children. Mataji, I'll start. Yes, yes. Yes, Mataji. Okay, so Hare Krishna. With the blessings of you all, I'm going to speak a few lines on glorification of Prabhupada. So I offered my respectful obeisance to Prabhupada. It is very difficult for a small girl like me to glorify a gigantic personality like Prabhupada. So Srila Prabhupada, a combination of so many things. He is a scholar, a philosopher, a cultural ambassador, a prolific author, a religious leader. In truth, he was all these things and much more. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who introduced Sankirtan movement, declared that the chanting of holy name would spread beyond the source of India to every town and village in the world. He predicted that his commander-in-chief would appear to accomplish this mission. Yes, Srila Prabhupada appeared to fulfill this prophecy. To fulfill the order of this spiritual master, Prabhupada's journey to the West to preach Krishna consciousness is really heart-touching. In 1965, at the age of 69, Srila Prabhupada traveled to New York City in a cargo ship. The journey was so difficult, and even he suffered from two heart attacks on his way. Arriving in the United States with just $7 in Indian rupees, Srila Prabhupada began to share the timeless wisdom of Krishna consciousness. After reaching New York, when he saw the lifestyle of people living there, he became disheartened and prayed to Krishna, "I don't know why you have brought me here. How will I make them understand?" Krishna also answered his prayer, and the result is before us. Before 500 years ago in Bengal, Lord Nityananda started the Namahatam, the marketplace of the holy name, where everyone can come and get the holy name. But what's the price of purchasing it? The price of purchasing isn't an ordinary pound, sterling, or rupees. What's the price then? The price is faith. The price is desire. If one has the faith to chant, the desire to take the mercy, that is the only price. And of course, Srila Prabhupada actually established this transcendental marketplace of the holy name all over the world. A devotee can come, pay the price of love and faith, and get wholesale mercy in return. They make their spiritual advancement. After realizing the taste of chanting, he takes the goods and distributes to others, and that's the pure holy name. This is the essence of preaching. Why ISKCON is unique in comparison to other spiritual organizations? It is due to its preaching. Prabhupada said in Chaitanya Mahaprabhu's movement that everyone is a preacher. Whether a man or a woman, it does not matter. Everyone should go out and preach because this is the best service we can contribute towards our society. Prabhupada made preaching so simple. He said, "Simply read my books and repeat what I have written, and then your preaching will be just perfect." It is due to this preaching only I came in contact with ISKCON, listened about Prabhupada, and now I got the opportunity to share my views before you all. His motto was "Preaching is the essence,
Purity is the force, books are the basic, and utility is the principle. Srila Prabhupada is the spiritual ambassador who visited our planet and gave us the message of Godhead and invite us to come back to home, back to Godhead. According to Srila Prabhupada, Krishna consciousness is the way of life. He considered all people as the lost children of Krishna. Seeing that people were chasing after the material pleasures, being unaware of the spirituality, he endeavored tirelessly to distribute the treasure of spiritual wisdom to everyone and thereby remove their poverty of knowledge. Prabhupada was a pure devotee of Lord Krishna. Pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred river. One can derive spiritual benefit out of prolonged use of the Gange water, but one can be sanctified at once by the mercy of pure devotee of the Lord. To take shelter at the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure devotees. I am so fortunate that at such an early age I have come into contact with the pure devotees of ISKCON. I might have done some good work in my previous birth that I came in contact with you all. I feel these kinds of spiritual activities will help me a lot in my future life. I give special thanks to Indumati Mataji and my mentor Priyanka Mataji for guiding me so well in my spiritual journey. I thank ISKCON and all its members for their cooperation and assistance. At last, I sincerely thank you all for giving me the opportunity to share my views. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Thank you. Hari Bol. Hare Krishna. Okay, now Shanvi. Now I will. Pragya Mataji, please continue the program. May I request? Hare Krishna, Dandavat Pranam. Mataji. Hare Krishna Mataji, Tandavas Pranam. I am from Krishna Angi 2. Okay, so Hare Krishna to everyone, Dandavat Pranam. And I am blessed that I am here with you all. So now we will see the talent show which is done by our little Gopika Sanvi. So let's start. Narayanam bhaje Narayanam Lakshmi Narayanam bhaje Narayanam 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 Pankajalocanam Narayanam Bhakta Sankatamochanam Narayanam Karunapayonidhim Narayanam Bhavya Sharanagata Nidhim Narayanam Narayanam bhaje Narayanam
लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणम् नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं निब 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 मबनी निजरे मबनी निज नारायणं 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 भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं So, Hare Krishna. It's a beautiful performance by K. Sanvi, which is जो कि एज में बहुत ही छोटी है, गोपो गोपिका से सबसे छोटी है, पर श्लोका रिसाइटेशन में एक्सपर्ट है. और आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम देयर मेंटर एंड आई एम देयर सर्वेंट लीडर. Now we are going to start Gita recitation by Gopo Gopika 1. So the participants in this are Kishori, Nibriti, Sanvi, Veer, Subhangi, Pratyusha, Sripad, Mukund, Shubhashri and Swagatika and Padma. And I am happy to announce that everyone is participating. All the Gopu Gopikas are participating in Gita recitation. But our one Gopika Pratyusha, she is ill, so she will not be able to participate. So let's start with Kishori. Hare Krishna Kishori. Hare Krishna Kishori. Can you start the Gita recitation of shloka number 4.13? हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. My name is Kishori Acharya. Today I am going to recite 4.13 number sloka. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुणा कर्मा विभागसा तस्य कर्तारमपि मा विद्या कर्तारमव्ययम्. अनुवाद भूत प्रकृतिर त्रिगुण एवं मानव समाज रे थिबा चारि वर्ण विभाग मो द्वारा सृष्टि होइछि. जदिओ मु एही चारि वर्ण विभागर सृष्टिकर्ता तथापि भी तमे जानि रखिबा उचित जे मु अव्यय हेबा कारणरु मु अकर्ता अटे. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय. Hari Bol. Very nice recitation by Kishori. Hare Thank you Krishna. so much. Thank you. The next is K. Nibriti from Bhubaneswar. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. Hare Krishna Mataji and my dear friends.
My name is K. Nivriti. Today I'm going to recite Bhagavad Gita Sloka chapter 4 text 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tadviti Pranipatena Pariprasnena Sevaya Upadekshanti Te Jnanam Jnanastasvadashinaha. Sloka translation. Learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him with reverence and render service unto him. Such an enlightened saint can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Bolo Srila Prabhupada ki Jai. Hare Bol, Hare Krishna Mataji. Okay, Hare Krishna, thank you so much. Now we will have Sanvi on the screen. Hare Krishna, Sanvi. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna everyone. My name is Sanvi. Today I am going to recite a sloka from Bhagavad Gita. Chapter 5 verse 29. Bhuktanam yajya tapasam sarva loka maheshwaram urdam sarva bhutanam yantvamam santim muchati. Here Krishna says to Arjuna, having realized me as the enjoyer of all the sacrifices and austerities, the supreme Lord of all the worlds, and the selfless friend of all human beings, a devotee attains peace. Hare Krishna, thank you, Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Hari Bol for Sanvi. It was a beautiful recitation. Thank you so much. Then Hare Krishna Veer, can we have you on the screen? Our next participant is Veer. So Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yeah, start. Vidya Vinaya Sampane Bhamane Gavihastini Suni Chaiva Swapake Cha Pandita Samadarshina. An intelligent person with his real knowledge and kindness, but difference not see any difference between the species or between Brahmana, dog eater, elephant and cow. Hare Krishna. Wow, Hari Bol. So we told a nice thing that विद्या विनय संपन्न जो विद्या में परिपूर्ण होते हैं वो सबको समान दृष्टि में देखते हैं. So thank you so much Veer. Hari Bol. Then next we will have Subhangi on the screen. Hare Krishna Subhangi. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, I am Subhangi. Today I will recite a sloka from Bhagavad Gita, chapter 6, sloka number 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yogi Namapi Sarvesam Madgate Nantarantana Shraddhavana Bhajate Jo मांशमे युक्त तमो मतः. अनुवाद. यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि जोगियों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ जोगी होता है वो मुझे अंतरात्मा से बहुत प्रेम से जो कि मुझे भजता रहता है वो मेरे से वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की Jay. Wow, Hari Bol. It was amazing. Thank you so much, Subhangi. Next. Hare Krishna Mataji, thank you. Okay. Next we will have Sripad on the screen. Then Hare Krishna Sripad. Can you continue with your sloka?
The smallest gopal. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mata Paratara Nanya. Kisi Ati Dhananjaya. Mahisabha Midapotam. Sute Mani Ganaibo. Anuvada. E Dhananjaya. Madharada. Okay, thank you, Sripad. Thank you so much for reciting so nicely. Sripad is the most smallest gopal, and he did it so well. Then Hare Krishna Mukund. Hare Krishna Mataji. Okay, why your name is Jagai? Dandavat Pranam. Please continue with the sloka. I am Hare Krishna. I am Swayam Pandit. Sloka number chapter number 14. Sloka number chapter number 7. Chapter number 7. Sloka number 14. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Devi Usa Gunamai Mumam Durata Amai Panche Papatante Amai Tantaram Tite Anubata Putava Kute Tikon Juta Morai Maya Moro Devi Satiko अतिगम कलिया को बड़ा कठिन किंतु जो माने और शरणाने आसंती से माने अति सहजरे आया को कलि जानती अतिक्रम कलि जानती हरे कृष्ण शिलादाबाद की जय Jai. Hari bol for Mukund. He did it very nicely. He is so small, but he did it very well. Wow. It's fantastic. So thank you, Mukund. And I wish korchu ki tame sabubale emti shloka kuha. Okay. So next we will have Subhashri on the screen. Hare Krishna Subhashri. Yes, continue. I am Subhashri Das. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Sloka number 7. Chapter number 7. Sloka number 15. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Moda. Om Adistata no moda. Pavadanti narano. Maya paritapjana. Asuma parinasita. Upada. Joman ganda mukha. Onora dhama. Sirmanangano ku. Naya chori badi nechi. Vasura lokamane. No saranane. Asantini. Sila Prabhupada ki jai. Hari bol. Wow, very nice. Hari bol. Thank you so much, Subhashri. And Subhashri and Swagatika both are sisters. ये दोनों बहनें हैं और साथ में जप करते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, जैसे कि सानवी और निवृत्ति. So now we will have Swagatika on the screen. Hare Krishna, Swagatika. My name is Please continue. Swagatika. Hare Krishna. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Bhuvana Dambanamote
ज्ञानवर्मा पपदे वासुदेव सर्वमिश्र महात्मा दुर्लभ अनुवाद जे प्रकृतरे ज्ञानवान से जन्म मृत्यु चक्र गुरु Okay, thank you, Swagatika. You recited so well. Hari bol for the both of you sisters. So you really did a very nice job. So our next participant is Padma. So Hare Krishna Padma, can we have you on the screen? Hare Krishna. My name is Padma. Now I am going to recite a sloka from Bhagavad Gita 8.6. Narayanam namaskrutyam naram chaiva narottamam deving saraswatim vyasam tadanjayamudidayat nashtaprayasva bhadresu nitya bhagavata sevaya भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवानुवाच यं यं वापि स्मरणं भावं त्यजतन्ते कलेवरं तं तमेव एति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। अनुवाद श्री भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय जो भाव में रहते हैं वो निश्चित रूप से वही भाव प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। Okay, thank you so much, Padma. You recited so well. Also, आपने एक बहुत अच्छे से अनुवाद को समझाया. So, Hare Krishna and thank you to all the Gopa Gopika 1 participants. And you all did a very great job. And आप सभी ने participate किया श्रील प्रभुपाद के लिए, और फिर श्लोका को भी बहुत अच्छे से रिमेम्बर किया, फिर अनुवाद को भी. And I hope कि आप enjoy किए हैं. So now we will move to our next program. So Hare Krishna, Gayatri Mataji, now over to you.
Hari Bol. Very nice. Thank you so much. Thank you, Mataji. Okay, so can we have the story? Yes, Mataji. Hare Krishna, everyone. Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada. And first of all, I would like to thank Her Grace Indumati Radhika Mataji for giving me this golden opportunity to serve the children of Krishna Krishnangi 1. So now I would like to welcome Rajeshri Sahu to speak a narrative on the topic Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna, Rajeshri, are you ready? Yes, Mataji, I am ready. Okay. Hare Krishna. First of all, I offer my humble obeisances unto the lotus feet of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Next, I bow down unto the lotus feet of all the assembled devotees. Today, I, Rajeshri Sahu, feel blessed to speak something on the glorification of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. How can one truly understand the greatness of the Supreme Lord? We don't have to look further than the Bhagavad Gita, where Lord Krishna says, "This is the very ancient science of relationship with the Supreme, is today told by me to you because you are my devotee." A devotee is one who accepts the supremacy of the Supreme Lord, and he is convinced about his eternal relationship with God. Because God is a person beyond all time and space, we can never understand him by our speculation. He can be understood only when he reveals himself. To our great fortune, he has revealed himself in the Vedic literature, which presents the fullest explanation of the transcendental names, forms, qualities, and activities of God. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and he has many forms and names. He is the original source of all the personalities of Godhead. He expands himself in as many forms as there are waves in the ocean. Each expansion or avatar is equally omnipotent, yet Krishna is named as the original, like the original candle that lights many others. In Bhagavad Gita 10th chapter, 12th verse, Arjuna addresses Krishna and says that you are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, and the absolute truth. You are eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages, such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa, confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. In Brahma Samhita, Brahmaji says Krishna, who is also known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal, blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. In Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, and verse number 1, Srila Vyasadeva says, O my Lord Sri Krishna, son of Vasudeva, O all-pervading personalities of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Sri Krishna because he is the absolute truth and primeval cause of all causes of the creation, sustenance, and destruction of manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. He is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By him, the great sages of demigods are placed into illusion as one is bewildered by the illusionary representations of water seen in fire,
and one land seen on water. Only because of him do the material universes, temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature, appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusionary representations of the material world. I meditate upon him because he is the absolute truth. In Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, 7th chapter and 7th verse, it is said, Krishna, the reservoir of pleasure, is the Supreme Personality of Godhead Himself, the Supreme Controller. No one is greater than or equal to Krishna, yet he appears as the son of Maharaj Nanda. In 10th chapter of Bhagavad Gita, verse number 8, Krishna says that I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. The glories of Krishna are unlimited, which can't be described in our entire lifetime. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is infinitely great, but he is bound by love. Therefore, everyone should engage themselves in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. We should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. If one is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Thank you very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Hari Bol. Thank you so Hari much, Bol. Rajeshri. Hari Very Bol. nice. Hare Krishna. Yes, we hope all of you relish this nectarian narrative by Rajeshri. So big Hari Bol for Rajeshri. Hari Bol. Okay, so now we have two talent shows by our little Gopa Gopikas. Hare Krishna, Danvat Pranam. So, I know कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, पर वो हमारे इंदुमती माता जी हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना भास्ट हो सकता है. एंड हम कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड chanting and all the spiritual activity, because everything is Krishna's. So our every talent can be used in the service of Krishna. So thank you Indumati Mataji for making us realize this thing, and जो कि हमें कभी भी डिस्करेज नहीं किया कुछ भी करने के लिए, और हम जो भी करते हैं माता जी ने हमें हमेशा एनकरेज किया उसको हम कैसे कृष्णा के सर्विस में यूज कर सकते हैं. वैसे हमारा एक गोपा है जो कि वीर, वो एक बहुत ही बढ़िया साइकिल स्टंट मैन है. So let's see how he is doing his cycle stunt. I am a devotee in Gauranga's army. Please won't you chant and become happy? If you chant Hare Krishna, your life will be simpler, for you'll be with your best friend all of the time. Hare is the name of the Lord's energy. Rama is the source of all strength you see. Krishna is the reservoir of pleasure ever fresh. Engage in his service and you'll be blessed. Please won't you join us in Gauranga's army? Simply chant and peace eternally. I know you won't be sorry, you will want to evermore distribute love of Godhead from door to door. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
बम एंड जो साइकिल स्टंट मैन है उनके बीच भी प्रचार होना चाहिए और ये प्रचार वीर करेगा. हरि बोल फॉर वीर. सो नेक्स्ट ओवर टू यू विष्णुप्रिया माता जी. Hare Krishna everyone, Dandavat Pranam. So now we will listen a beautiful song by Yamuna. So can we have Yamuna on the screen? Thank you, Yamuna, for this beautiful kirtan. And Yamuna is only 5 years old, and she is from Gopu Gopika too. And she loves Krishna very much. So over to you, Pragya Mataji. Hari Bol. Very nice. Hare Jai Guru Krishna, Pranam. Dandavat Pranam. Yes. Hare Hari Krishna Bol. Mataji, Hari Bol. Dandavat Pranam. And Hare Krishna to all the Vaishnavis and all the kids and teens present here. Okay. Srila Prabhupada ki jai. And we're here in a very auspicious occasion today. And we have got an opportunity to see different kinds of activities and Krishna consciousness within all the activities in the children today. And I'd like to request here Gaurav to glorify Shri in the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hope you are ready, Gaurav. Yes, Mataji. Hare Krishna. You can start Hare, now. Hare Krishna, everyone. My humble respect to you all. I extend my heartfelt thanks to you all for giving me the opportunity to speak a few lines on Lord Chaitanya Mahaprabhu in Radha Bhav. As we all know, Chaitanya Mahaprabhu is an incarnation of Lord Krishna. He appeared in the Kali Yuga to deliver the mankind by spreading the Sankirtan movement. In Srimad Bhagavatam, it is clearly said in Kali Yuga, chanting of the holy name of Krishna is the only weapon to fight with Maya. Thus, Lord Krishna came to this earth in the form of a devotee to teach us how to practice bhakti. It is only by devotional service that we can develop love for Supreme Personality of Godhead. Though this is the outward reason, but there is a secret reason behind Chaitanya Mahaprabhu's appearance. He was internally Krishna, but externally accepted Radha Bhav. He was a molten gold color like Radharani and also accepted the mood of Radharani. Why Chaitanya Mahaprabhu accepted Radha Bhav? Lord Krishna is Rasaraj, the source of all pleasure. His topmost lover was Srimati Radharani. Though he loved all gopis, but Radharani was the dearest lover of Lord Krishna. But Krishna realized that Radharani was getting more transcendental pleasure than Krishna. This made Krishna unhappy.
He also wanted to taste the sweetness of love that Radharani was enjoying. So he decided to appear in this Kali Yuga with Radha Vav. He was always submerged in the love of Krishna. He was frequently crying in feelings of separation from Krishna. Srila Prabhupada also said one should learn how to cry for the Lord. When a child cries for something, then mother fulfill his demands. Similarly, when we cry for the Lord to get his mercy, Krishna could definitely answer us in his language. At last, I thank ISKCON and Prabhupada who were spreading Chaitanya Mahaprabhu's message all over the world. I am so fortunate for being a part of ISKCON family. With the blessings of you all, I hope to progress in my spiritual life. Please have mercy in a fallen soul like me. Thank you all. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna Mataji. की जय श्रील प्रभुपाद की जय Jai. की Jai. जय Hari Bol. Thank you so much, Gaurav. Through you, we got such a beautiful message that Harina Mahamantra is the only weapon that we can fight with Krishna. We can fight with Maya. Sorry. So, if we do the Harinam Mahamantra every day with true spirit, with bhakti, then we can reach to Krishna for sure. Huh? And we can fight with Maya very strongly. So, all the kids, I hope you all are doing the Mahamantra every day and asking Krishna for us to go back to Godhead and doing your job very nicely. Thank you so much. Thank you so much, Gaurav. All the glories to Srila Prabhupada. All glories to Guru Gauranga. Nita Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Over to you, Hare Krishna Mataji, Chetna Mataji. Hope you are there. Hare Krishna. We will now have the glorifications of all the groups. Gopa Gopika 1, 2, 3, and 4. So all leaders and mentors, you can be ready. Hari Bol. Hare Krishna, Dandavat Pranam. So I am Pragya Mataji, member of Gopa Gopika 1. Actually, it is Bhakti Fest, जोटा कि इंदुमती माताजी ड्रीम प्रोजेक्ट. इंदुमती माताजी का बहुत ही मन था कि हम बच्चों के लिए कुछ करें. वो स्ट्रांगली चाहती थी कब से कि हम बच्चों के लिए कुछ करें. एंड फाइनली इट बिकेम पॉसिबल थ्रू भक्ति फेस्ट. सो बाय द मर्सी ऑफ श्री श्री गौर निताई, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, and Srila Prabhupada and Guru Maharaj, we got the opportunity to serve these future leaders of Srila Prabhupada, Prabhupada warriors. So Gopa Gopikas are the सबसे छोटे हैं Gopa Gopikas, and they are, Prabhupada used to say they are Vaikuntha children. तो वो सिर्फ वैकुंठ चिल्ड्रेन है और हमें प्रभुपाद ने सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि उनका ख्याल रखें. नेदर दे आर वैकुंठ चिल्ड्रेन. एंड माता जी हमेशा बोलते हैं कि मैं सिनेमा हॉल में जो टॉर्च दिखाते हैं मैं वो हूँ. तो माता जी हमें जो सिनेमा हॉल में टॉर्च दिखाते हैं हमें कहाँ पे बैठना है, तो तब हम जान पाते हैं कि हमें कहाँ बैठना है. तो माता जी ने हमें दिया ये चांस. तो थैंक यू इंदुमती माता जी, यू गेव अस चांस टू सर्व दीज लिटिल वैकुंठ चिल्ड्रेन. So and I am really blessed to be their mentor because I am learning a lot. मैं उनसे बहुत ही कुछ सीख रही हूँ और ये लोग इतने एक्साइटेड, इतने एनर्जेटिक हैं कि वो आपको भी एक्साइटेड और एनर्जेटिक कर देते हैं. तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगी किशोरी से. एंड ऑल दीज चिल्ड्रेन आर सो टैलेंटेड एंड होमवर्क मिलने के बाद वाला दिन ही ये लोग भेज देते हैं. श्लोका रिसाइटेशन उसके बाद वाला दिन ही भेज देते हैं.
they are so expert, and they are so thoroughly doing all these co-curricular activities, and they're chanting nicely, and they have changed their habits, and they are shifting so nicely, and I am blessed to be their mentor. तो पहले मैं शुरू करूंगी किशोरी. So किशोरी, the most sincere and obedient गोपिका है, जो कि भगवान के लिए रसोई भी करती है, अपने मम्मा पापा को गार्डनिंग में भी हेल्प करती है, भगवान के लिए फूल लाती है, हमेशा घर पर आरती करती है, और फिर बहुत ही ओबीडियंट है, और क्राफ्ट में भी इंटरेस्ट है, और वो शी इज लाइक रेडी फॉर एवरीथिंग. माता जी, जस्ट टेल मी व्हाट आई शुड डू, then I am ready to do everything, and I will do gardening, I will dance, I will sing, I will do kirtan, I will do aarti. So these kids are very blessed. So thank you, Kishori, for and we are blessed to have you in our group. And also thank you to your parents, those who are encouraging you to be a good devotee. Then next I will move to Subhangi. वो हमारे सबसे एक्साइटेड गोपिका जो है, और वो कृष्णा के लिए उसका हॉबी है गार्डनिंग करना. गार्डनिंग करती है, हमेशा पेड़ पौधे में पानी देती है, और फिर श्लोका रिसाइटेशन में भी एक्सपर्ट है. ऑल द गोपिकाज आर एक्सपर्ट इन श्लोका रिसाइटेशन. या ओके. तो शुभांगी जो है वो बहुत ही एक्साइटेड रहती है हमेशा, माता जी हम ये करेंगे वो करेंगे. पूरी परिक्रमा के टाइम में भी पूरा एनर्जेटिक के साथ पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, क्राफ्ट में भी, और जो भी कुकिंग का एक्टिविटी मिले या फिर क्राफ्ट का मिले या फिर मंडल आर्ट का, हमेशा रेडी रहते हैं. सो थैंक यू शुभांगी फॉर joining and motivating us. Okay, so हरी बोल. Then next is श्रीपाद. श्रीपाद जो है बहुत ही छोटा है, पर वो भी हमारे लिए इंस्पिरेशन इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ही जब से छोटा था तब से वो भक्ति कर रहा है, और उसकी फैमिली भी उसको बहुत ही हेल्प करते हैं, और वो चैंटिंग करता है. वो फिर क्लास में जो भी बोला जाता है, माता जी मना किए हैं पानी वेस्ट नहीं करना, मतलब पानी वेस्ट नहीं करता है, और सबको बोलता है कि माता जी ये बोले हैं हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए. सो थैंक यू श्रीपाद. देन नेक्स्ट इज सानवी एंड निवृत्ति. So these are the sisters, both are sisters, Sanvi और निवृत्ति, are the most sincere, obedient, humble and cooperating. ऐसा कोई भी श्लोका नहीं है जो भी क्लास में पढ़ाया गया है और उन्होंने ना किया हो, रिकॉर्डिंग करके ना भेजा हो. दोनों मिलके जब करते हैं, और फिर डांसर हैं, सिंगर हैं, अभी कृष्णा के लिए डांस करते हैं, गाना गाते हैं. और माता जी अभी किसका बोल रहे हैं अभी? उसका नाम क्या है? और निवृत्ति है. ओके, तो सानवी और निवृत्ति तो दोनों बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं और हमेशा क्राफ्ट बहुत अच्छे से करते हैं. तो थैंक यू बोथ फॉर participating so nicely, so actively and engaging yourself in Srila Prabhupada's service. Hari bol. So the next is Padma. पद्मा जो कि बहुत ही हम्बल है, पूरा धीरे से बात करती है और फिर बहुत अच्छे से जवाब देती है. जो भी श्लोका का अनुवाद बोलो, स्टोरी बोलो, पूरा ध्यान पूर्वक सुनती है, फिर जवाब देती है, जैसे कि और फिर बहुत ही ओबीडियंट है, क्राफ्ट में भी एक्सपर्ट है, ड्राइंग में. So thank you Padma that you are here with us and participating so nicely. Okay, so next is Mukund. Mukund, the most energetic, smart boy. And वो बहुत ही अच्छा कीर्तन करता है, मृदंग बजाता है और खाना बनाना उसको बहुत पसंद है. हमारा जो एक्टिविटी दिया जाता है, कुकिंग एक्टिविटी, वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और बहुत इंटरेस्ट के साथ बना के कृष्णा को भोग ऑफर करता है. क्रिकेट खेलने के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू मुकुंद, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू एंड वी विश कि
आप और भी एंगेज रहें कृष्णा के सर्विस में। द नेक्स्ट इज वीर। वीर इज अ वेरी यूनिक, माने हमारा हमेशा हॉबी होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पर वीर जो है उसका ड्रीम बहुत अलग है। वो साइकिल स्टंट मैन बनना चाहता है, और फिर उसे पशु पक्षी इनसे बहुत ही प्यार है, और बहुत ही हम्बल है, तो और कौन है, हाँ शुभश्री एंड स्वागतिका। शुभश्री एंड स्वागतिका ये भी 2 बहन हैं, और they are very new to Gopu Gopika but doing very well, chanting nicely and also sending co-curricular activities. Then 3 best Gopu Gopika कौन है ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि all are best Gopu Gopikas, and everyone doing everything, so what can I say? Okay, the next time we will decide. Yes, Next time Hari हम Bol. देखेंगे all our best. Hari Bol for Gopu Gopikas, and I am blessed to have you. Srila Prabhupada ki jai. Har Grace Indumati Mata ji ki jai. Hare Grace Pragya Mataji ki jai. Thank you so much, Hari Bol. Hare Krishna, Dandavat Pranam. So I'm mentor of Gopu Gopika 2 and Gopu Gopika 3. So first of all, I would like to thank all the parents and children जिनके वजह से क्लास हो पा रहा है, और हमें चांस मिल रहा है कि हम अपना साधना अच्छा करें उन लोगों के वजह से. So thank you, because we are advancing in Krishna consciousness. In Gopu Gopika 2, we have 17 children. I'm going to read out the names. गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज Someone is singing Kirtan. Shall I stop? यमुना तीर बनधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीनाथ वल्लभा गिरिवरधारी सोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनझारी जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे. हरि बोल. Okay, Hare Krishna, nice Kirtan. Okay. So we have 17 children in Gopu Gopika 2. So I'm going to Yeah, Hare Krishna, Vishnu Priya Mataji, you can start again. Yes, Mataji. I was muted. Sorry. Yeah, no problem. Okay. So first of all, I would like to thank all the children and parents जिनके वजह से हमारा साधना इतना अच्छा चल रहा है. और so in Gopu Gopika 2 we have 17 children. I'm going to read out their names. Aradhya, Anupita, Tamanna, Yamuna, Sriniket, Suchishmita, Jishnav, Anvi,
कृष्ण प्रेयसी, लिप्सा, भाग्यलक्ष्मी, चितांशु, नियति, साई अमृत्य, आदित्य, विनेशा and Gourangi. So out of them, 3 children are very good. All are good, but 3 children are very good. They are Aradhya. So Aradhya is a very sincere girl and she chants 5 rounds every day. और जितना भी होमवर्क दिया जाता है वो पहले करते हैं और फिर अनुकृता, शी इज फ्रॉम कोलकाता और शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, शी सिंग्स वेरी वेल, स्पीच भी बहुत अच्छा देती हैं, शी इज वेरी गुड एट एवरीथिंग। वो कृष्णा से प्यार करती हैं इसलिए वो सब कुछ बहुत अच्छे से करती हैं। तो शी इज ऑलवेज एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू कृष्णा। कृष्णा के बारे में जब भी कोई बात आती है वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और यमुना, तो यमुना का कीर्तन तो आप लोगों ने सुना। शी इज जस्ट 5 years old और वो भुवनेश्वर से हैं और वो कृष्णा से इतना प्यार करते हैं कि उनके पास छोटा सा लड्डू गोपाल भी है और वो उनको खिलाती हैं और उनका सेवा करती हैं और सुबह और शाम को उनको कीर्तन भी करते हैं उनके सामने। And in Gopa Gopika 3 we have 15 students: Anubhav, Sai Ernest, Puspendu, Avigyan, Priyansi, Adyasha, Monisha, Divyansi, Gatik, Sai Hardik, Yatharth, Aditi, Sandeepa, Ashutosh and Vishnupriya. So out of them, 3 children are very good. They are Puspendu. Puspendu is from a devotee family and उनको वो जन्माष्टमी में वो कंपटीशन में उनको वो पार्टिसिपेट किए थे। वहां पे बोला गया था कि 2 से 3 श्लोक बोलना है और वो इतना श्लोक बोले कि 15 मिनट चला गया, ना जज को ना लोगों को पता चला ना उन्हें पता चला। So he is very good at reciting sloka. Sai Ernest is not a devotee family, not from a devotee family, but फिर भी उन्हें बहुत कुछ पता है कृष्ण के बारे में और जब भी जो भी होमवर्क दिया जाता है वो पहले करते हैं और हमेशा फर्स्ट करते हैं हर चीज जो भी दिया जाए, चाहे वो क्राफ्ट हो, श्लोका हो, भगवान के बारे में हो, जो भी हो। एंड देन अनुभव इज अ वेरी नाइस बॉय एंड ही लव्स कृष्णा वेरी मच। तो कृष्णा जब वो पहले आए थे उनके मम्मी हमेशा बोलते थे कि अनुभव को बहुत तकलीफ होता है समझने में, चीजें समझने में उन्हें बहुत तकलीफ होता है और वो श्लोका जल्दी याद नहीं रख पाते, वो वर्ड्स बोलने में उनको बहुत तकलीफ होता है। पर अभी वो इतना श्लोका बोलते हैं, वो हमेशा वो कभी भी कुछ भी काम करते होंगे वो सिर्फ श्लोका ही बोलते हैं। तो लोग जैसे काम करते करते गाना गाते हैं ना, अनुभव काम करते करते श्लोका बोलते हैं घर में हमेशा। So Hari Bol for all of you. So over to you, Prabhati Mataji. Hare Krishna. All glories to Gopa Gopika 2 and 3 and all glories to Vishnupriya Mataji for taking so good care of the children. Very nice. Hari Bol. This is for all parents to know कि ये बस 2 महीने हम लोग every 2 months में ये प्रोग्राम करते हैं. So every 2 months में जो बच्चों का थोड़ा बाकियों से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है उनका नाम हम ज्यादा लिए हैं, but not to worry, all children are very good. So बाकी बच्चे लोग जो भी present हैं, make sure your names are taken in the next Bhakti Fest program in the month of March. So buck up everyone and welcome the mentor of Gopa Gopika 4, Prabhati Mataji. Over to you. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna everyone. My name is Prabhati Mataji. My name is Prabhati Mataji. I am the mentor of Gopa Gopika. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सारे पेरेंट्स को और हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर इंदुमती माता जी को, जिनके वजह से आज हम आपके साथ हैं और आपके एसोसिएशन पा रहे हैं। और जैसे कि विष्णुप्रिया माता जी ने बोला कि इन लोग के वजह से हमारा साधन और इंक्रीज हो रहा है, हम डिवोशनल में और अटैच रह पा रहे हैं। पहले तो हम बहुत बहाना हमारा बिजी का दिखा देते थे, बट अभी क्लासेस रहता है, बच्चों का केयर करना, ये सब में सेवा में इतना कॉन्सेंट्रेट रहता है कि कुछ भी करे हमारा क्लास और बच्चों के ऊपर फुल कंसंट्रेट रहता है, जिसके कारण हम भक्ति में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं।
तो थैंक यू सो मच माता जी। तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गोप गोपिका 4 में बहुत चाइल्ड्स 12 से। तो फर्स्ट है तनिष्का, देन वसुधा, देन अरमान, दिव्य प्रकाश, निधि प्रज्ञा, प्रगति, साई सिद्धि, आद्यसा, देन प्रीतिस्ना, अभिश्री एंड आहान। तो गोप गोपिका 4 में इतना स्टूडेंट है जो रेगुलरली क्लास कर रहे हैं। तो जैसे कि माता जी ने बोले कि जो ये 2 महीने से जो स्ट्रीट लिया और बहुत भक्ति में इंक्रीज कर रहे हैं, हम उनका नाम अनाउंस करें। तो देखा जाए तो गोप गोपिका 4 में सारे बच्चे बहुत स्पीड है भक्ति में। तो उनमें से जो थोड़ा स्ट्रिक्टली साधन कर रहे हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तनिष्का का नाम लेना चाहती हूँ, जो उड़ीसा संबलपुर से हैं और वो यूकेजी स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। बहुत क्यूटी सी लड़की है और साधन बहुत अच्छे से करती है। वो डेली 6 राउंड चैंटिंग करती है। और उनकी मम्मी और वो चाइल्ड तनिष्का, वो मुझे मिलने भी भुवनेश्वर आए थे। मैं उनसे मिलने गई थी भुवनेश्वर कृष्ण बलराम टेम्पल, और मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो साधन भी इतना अच्छे से करती है और चांट भी करती है। और जो भी उसको गीता श्लोका रिसाइटेशन करने के लिए दोगे और या स्टोरी रिसाइटेशन करने के लिए दोगे, वो डेली फर्स्ट वो करके दे देती है। एनी डाउट्स वो मुझे डेली कॉल करती है, माता जी वो कैसा करेंगे, माता जी ये करेंगे। उनकी मम्मी भी बहुत एक्साइटेड है और बहुत इंटरेस्टेड है भक्ति में, जिनके वजह से तनिष्का आज कर पा रही है। इसलिए मैं माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हम इतने अच्छे से क्यूटी से चाइल्ड को हमें दिए हैं, और जिनका एसोसिएशन के थ्रू से हम भी अपनी भक्ति के थ्रू आगे बढ़ पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच तनिष्का। देन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू वसुधा। जो वसुधा वो भी उड़ीसा भुवनेश्वर से हैं और वो स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते हैं। वो भी बहुत क्यूटी सी लड़की है और साधन बहुत अच्छी तरीके से करती है। वो डेली 2 या 3 राउंड चैंटिंग करते हैं और भगवान का डीटी, उनकी मम्मी बता रही थी, वो डीटी सेवा में बहुत इंटरेस्टेड है और वो बहुत अच्छा डीटी सेवा करते हैं। मंगल आरती और नरसिंह आरती भी करती है संध्या आरती के बाद, और डेली चैंट भी करते हैं। और वो भी बहुत फास्टली श्लोका रिसाइटेशन करके भेजते हैं और स्टोरी भी। तो थैंक यू फॉर वसुधा एंड ऑल्सो हिज पेरेंट्स। कि मैं माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी मुझे पूछे रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि माता जी कौन सा श्लोक है, इतना इंटरेस्टेड है। वो भी तो डिवोटी है। तो हम आपसे ब्लेसिंग चाहते हैं माता जी की, जैसे हम लाइफ टाइम प्रभुपाद की सेवा और बच्चों के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच वसुधा। देन हम बोलना चाहेंगे निधि के बारे में। निधि, हरे कृष्णा। निधि तो अभी नया क्लास ज्वाइन किए हैं, फिर भी वो भी एक डिवोटी फैमिली से हैं, हैदराबाद से हैं। उनकी मम्मी बता रही थी वो भी डेली उनकी मम्मी के साथ उनकी माँ के साथ चैंटिंग कंप्लीट करते हैं 6 राउंड्स। और उनके एक हैदराबाद से एक टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, जहाँ पे उनके पिताजी आरती करने के लिए जाते हैं। इनके साथ निधि साथ में चलते हैं आरती करने के लिए, और उनकी मम्मी के साथ गीता रिसाइटेशन करते हैं और चैंटिंग पूरा करते हैं और प्रभुपाद के लेक्चर भी सुनते हैं और भगवान का आरती भी करते हैं। बहुत आगे हैं, तो तब भी हो पा रहा है, ये भी जो कर पा रहे हैं पेरेंट्स के वजह से थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच निधि एंड ऑल्सो हेयर पेरेंट्स। देन हम बोलेंगे अरमान, हरे कृष्णा। अरमान भी 5 इयर्स का है, वो पारादीप से है। वो भी बहुत अच्छा करती है, साधन करती है। उसको जो भी रिसाइटेशन श्लोका दोगे या स्टोरी रिसाइटेशन वो भी करता है। मम्मी बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे डेली वो भी फोन करके पूछते हैं, और जो भी कुछ बोलो अरमान को वो भी बहुत फास्टली करता है। तो वो भी चैंटिंग करता है, बट 1 and 2 राउंड्स करता है वो, बट साधन में बहुत इंटरेस्टेड है। Also his parents, तो थैंक यू सो मच अरमान, his parents, थैंक यू सो मच। और प्रभुपाद को और माता जी को और सारे सिंधी वैष्णवी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिनके कारण हम आज इन क्यूटी से बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ हम जुड़े हुए हैं। और मैं सबसे ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ कि माता जी ने मुझे ये सेवा दिए हैं,
ये ट्राई करूंगी इससे अपने साधन में स्ट्रांग रह के इस सेवा सर्वेंट जो सर्वेंट नाम है इसको जैसे बजाय रखो माता जी से वांछा तो दिस इज अबाउट द गोपा गोपिका 4 स्टूडेंट्स। तो अभी हम आगे और कुछ वीडियो देखना चाहेंगे। तो चेतना माता जी, कैन यू सी द वीडियो? Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada and all glories to Her Grace Prabhati Mataji. बहुत अच्छे से गोपा गोपिका के बच्चों को बहुत सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। Everyone is doing so well. It's a beautiful rendition of Gita Shlokas and Mangala Charan. So thank you so much, and we hope that जो बच्चे माता जी के साथ एसोसिएटेड हैं वो और आगे जाएं और बहुत कुछ सीखें और अपने पापा मम्मी के अच्छे बच्चे बने एंड श्रील प्रभुपाद की सेवा में हर समय लगे रहें। So thank you so much, Prabhati Mataji. Now we'll see some more videos of children, and I would request everyone not to unmute. सब अपने आप को म्यूट करके ही रखें, ताकि क्योंकि ये वीडियो बन रहा है एंड ये कल को YouTube पे आएगा। So we want कि आप लोग का सबका अच्छा इमेज उसमें आए, ताकि आप लोग अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं ये वीडियो। So इसलिए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करें, सब म्यूटेड ही रहें। हाँ, थैंक यू सो मच। सो कैन वी सी सम मोर वीडियोस? अभी हमारे पास ऐसे वीडियोस हैं जो एक्चुअली हम लोग अपार्ट फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस जो कि हम लोग पूरी परिक्रमा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास्ट टाइम्स दिखा रहे हैं, उसके अलावा हम वीक में और एक दिन भी क्लास करते हैं जो कि स्कूल से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है एनवायरनमेंट साइंस, उसको रिलेट करके हम लोग क्लासेस करते हैं। डिपेंड्स, वेडनेसडेज थर्सडेज करते हैं हम लोग, जहां पर हम कृष्ण के रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनिमल्स एंड फूड और एयर पोल्यूशन, इको सस्टेनेबिलिटी, ये सब टॉपिक्स पे कर रहे हैं। सो वी हैव स्टार्टेड वेरी स्मॉल, क्योंकि हम बच्चों को इसका नॉलेज देना चाहते हैं एंड आगे को जाके हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस हों एंड उसको रिस्पेक्ट करें, उसको प्रोटेक्ट करें और जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करें। Because Prabhupada says that, you know, simple living leads to high thinking. So हम कितना कम कंज्यूमरिज्म में घुसें उतना सबके लिए अच्छा है। तो वेस्टेज का फिलॉसफी नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस। So that is why we will be taking up more courses on how to minimize wastage and how to minimize pollution. So उसमें से just शुरू किए हैं अभी, तो उसके बारे में बच्चे कुछ बोल रहे हैं। So we would like to see some videos on that also. So we can see Anukrita's name here. I think it's her video is coming up first. Hari Bol. Hare Krishna everyone. Today I am going to be talking about extinct and endangered animals. Endangered animal. Endangered animal are animals in the passing years. Extinct animals are animals which no longer stay in this world anymore. Endangered. People are killing the Sumatran elephant because of their tusks. People are taking out its tusks and making jewelry. Sea turtle. People are killing sea turtles because of their backs. They are taking out its shell and making excess. Example, bonobos and mammoths. Bonobos and mammoths do exist in this animal. While we're killing them, building their house, breaking their house.
and cry. That is why these animals do not exist in this world anymore. Animals need Mataji, we cannot hear you. Hare Krishna, it's not audible. Mataji, we cannot hear you. Yeah, you will hear. Wait a minute. Yes. There is some network issue, so you will hear in 2 minutes. Just wait. Okay, within that time, let me tell you, we have a program tomorrow also from 4 to 6. And we will be having the older children perform those activities. So please make sure that you're there from 4 to 6 tomorrow also to encourage all children tomorrow. Okay. And today being the last day of the year, please enjoy the last year. Tomorrow is a new year. So for everyone, I hope you have lots of plans on how to welcome the new year. Now we'll see the video if it is playable. I hope it's playable. So, okay, so I hope you have grand plans for how to celebrate your new year. कैसे सब new year मनाएंगे, सब बढ़िया से plan जरूर किए होंगे. But every one of us must remember कि हम new year को welcome कैसे करेंगे? सुबह उठ के पहले जप करेंगे. Okay, we must do the chanting so that we can welcome the new year with Krishna's blessings and mercy. Okay, and then you can go ahead and plan a great time with your friends. Okay, so tomorrow morning we also have another program. This is for all mothers and the older children who are available today. Tomorrow morning from 7 to 8 o'clock we have Gita chanting, a translation from chapter 1 to chapter 6. Those who want to be a part of it can give their names so you can read. We will follow you. So for we should have one person chanting. Okay, so it is not the shlokas, it is only for the translations. So everyone who is interested can give their names. We want 6 people to read the translations tomorrow from 7 o'clock to 8 o'clock in the morning. So this is the information for tomorrow. And can we see the videos? Is it possible? राधा बनकर कृष्ण के लिए एक डांस कर रही हूँ. मुझे
Hare Krishna. I think we have some network issues. So, not a problem. ठीक है, कोई बात नहीं. We are more or less over with our program. And okay, Hare Krishna. I hope you all enjoyed the program today. जैसे जैसे साल end होने जा रहा है, I'm sure there will be a lot of network issues because अब बहुत लोग एक दूसरे को wishes भेजने लग रहे होंगे. And कल भी ये बहुत ज़्यादा होगा. So I don't know. Let's hope कि with Prabhupada's mercy हम लोग कल का show 4 to 6 भी अच्छे से कर पाएंगे. So wishing you all that this year, whatever it brought for you, good, bad, again, in the bad, there is good. So Corona came, but हम लोग बहुत अच्छे से इसको utilize कर पाए to propel ourselves in Krishna consciousness. So Corona has for us that way. And बच्चों इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े and इतना talented बच्चे हैं. अब तो हम wait कर रहे हैं बहुत eagerly कि कैसे हम मंदिर खुलने के बाद हम सब फिर कैसे मिलेंगे. And जो लोग दूर में हैं वो कष्ट ना फील करें because हम लोग जैसे ही मंदिर खुलेगा तब भी हम Zoom में क्लासेस करते रहेंगे और मंदिर में भी जब कुछ एक्टिविटीज होंगे तो हम Zoom पे उसको देंगे. सो आप लोग दूर बैठे हैदराबाद एंड कोलकाता एंड बैंगलोर हर जगह बैठ के आप इसका स्वाद ले सकते हैं एंड यू कैन बी कनेक्टेड टू अस. सो दिस हैज बीन अ वेरी फुलफिलिंग ईयर एंड हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कुछ कर पाने के लिए बिकॉज एक्चुअली हम लोग को ये सब आता नहीं था बट प्रभुपाद gave us all the mercy and he guided us every step to be able to deliver what we have delivered. This is just a small part of what actually the children are doing. बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं and सब पेरेंट्स को ऐसे भी पता है बट जो लोग पेरेंट्स नहीं हैं इन चिल्ड्रन के वो लोग जाने कि हम लोग बहुत कुछ ये बच्चे कर रहे हैं and you would be surprised and shocked the amount of talent these people have. And आज हम लोग का अच्छा slide shows भी था but I think the net has an issue so we will try and show it tomorrow. And कल 4 बजे Krishna Krishnangi age group probably somewhere 8 to 12 that age group के बच्चे जो हैं वो कल बोलेंगे. एंड गोप गोपिका का भी कल गीता उच्चारण recitation है एंड गौरांगा गौरांगी the age group of 13 to 18, okay, that age group is also going to perform tomorrow. So I hope you'll all enjoy it. For those who are new parents जो लोग हैं, thank you so much for being so patient and so enthusiastic and helping your children to move forward in Krishna consciousness.
Prabhupada says Krishna consciousness is not sentimentality. Okay, बहुत लोग सोचते हैं इन लोग का क्या काम है, सिर्फ जप करते हैं, नाचते हैं और क्या करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं. So people don't take it seriously, but Prabhupada says this is not sentimentality. This is just the outer facade. You are seeing how much joy we are feeling inside by realizing that we are parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. जब हमको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर किस पर्पस से आए हैं, ओके, हमको कैसे वापस घर जाना है, क्योंकि कृष्णा हमारे सुप्रीम फादर हैं, ये जब हमको रियलाइजेशन हो गया, सो नाउ वी आर जॉयफुल, we are happy, and nothing here in this world can give us pain. Okay? So that happiness we show through dancing and singing kirtan and chanting. Okay, so Prabhupada says in Krishna consciousness sab kuch hai. Okay, yadi dharma ka, if they say dharma, artha, kama, moksha are the 4 pillars. Okay, so jiske upar ek human life base karta hai, says you have all these 4 in Krishna consciousness. Okay, so we have the power of religion here, we have the power of financial and economic development here, then we have all kinds of sense gratification here, and we also know the road to liberation, how to go back to Godhead. Okay, so Krishna consciousness is a complete philosophy of life. Okay, and those who are in Krishna consciousness, they are actually enjoying life. Okay, so for जिनके बच्चे इसमें हैं और वो enjoy कर ही रहे हैं, I would request the parents also to take up Krishna consciousness, and it is a very sublime method, and it's a very loving and reciprocative method, wherein you feel all that love just by serving Krishna. Okay, so ऐसा कभी होता नहीं है, हम किसी को सर्व करते हैं तो हमका एक्सपेक्टेशंस रहता है मटेरियल वर्ल्ड में. इवन देवी देवताओं को भी सर्व करते हैं तो लगता है ये मेरे को देंगे कि नहीं, पता नहीं. देयर इज ऑलवेज a doubt, but when you serve Krishna there is no scope for doubt. Okay, it's only love and love and love. The more you give, the more fulfilled you feel. Okay, so welcome to Krishna consciousness, and the next year starts tomorrow, and I'm wishing every one of you जो लोग आज यहाँ present हैं कि आप लोग भी कृष्ण कॉन्शियस बने, और इससे बढ़िया सिस्टम नहीं है इस संसार में दुख को जय करने के लिए. Okay, so please be with us, and tomorrow please remember to join us at 4 o'clock, and prior to that, morning 7 to 8 we have translations from chapter 1 to 6, and those who are interested can join in. We will send the Zoom links in all our groups tomorrow, and we have 200 children connected to us. That's a very nice number, and I'm wishing all the children a very, very happy 2021. इसमें अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मस्ती करो, अच्छा टैलेंटेड और अपना टैलेंट्स ढूंढो और उसको दिखाओ, निखारो, एंड अपने पापा मम्मी के अच्छे बच्चे बनो, एंड कृष्णा के सबसे अच्छे बच्चे बनो. ओके, so thank you so much. We've had a very nice time with you all, and all my blessings are with all the children and their parents. Thank you so much, and all my mentors, okay, all Bhakti Fest team members, thank you so much. Prabhupada loves you because you have put up such a beautiful show. You're working so hard all through the last 4-5 months. Okay, and आप लोगों को बहुत बहुत thank you and बहुत बहुत आशीर्वाद. Thank you so much. Hare Krishna, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol. Thank you so much. Hare Krishna. Hare We can unmute Krishna, everyone. We can Mataji. say, can we do the Mahamantra once? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Hari Bol. Krishna Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Srila Prabhupada ki Hare Krishna jai. Mataji. Hari Bol.
Nitai Gaur, Mataji, Hari Bol, Hare Hari Krishna. Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you so much. Hari Bol. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Rama. So can we end the program here?